तो मेरे चैनल पे जाके न्यू लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से। Ferrite is defined as ferrite is defined as ferrite is defined as a eutectoid mixture of ferrite is defined ferrite is defined as a eutectoid mixture of ferrite is defined as a eutectoid mixture of ferrite and cementite. Ferrite and cementite. Ferrite and cementite. All right. Now, going to the next immediate side heading. बेटा इस डायग्राम से हमारे को solubilities of carbon find out करना पड़ता है. What is the carbon solubility in delta ferrite? What is carbon solubility in austenite? What is carbon solubility in alpha ferrite? What is carbon solubility in cementite? What is carbon solubility in alpha ferrite at room temperature? तो ऐसा 5 statements आते हैं बेटा. They are important statements. You need to remember the data. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वो side heading लिखेंगे. Then we will revert back to this diagram. So, right? Solubilities of carbon. Solubilities of carbon in various phases. Solubilities of carbon in various phases. Solubilities of carbon in various phases. So I am writing different statements here. Number 1, solubility of carbon. Solubility of carbon in delta ferrite. Solubility of carbon in delta ferrite is dash. Second statement, solubility of carbon. Solubility of carbon in austenite. Solubility of carbon in alpha ferrite is dash. Next, solubility of carbon in alpha ferrite, comma, at room temperature is dash. Number 5, solubility of carbon in cementite is dash. Write these sentences and get ready. बेटा इसमें से कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. सीधा डायग्राम याद में रखो, सब कुछ तुम्हारे याद में आएगा. राइट? जस्ट रिमेंबर द डायग्राम. यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स. ये सब कुछ आप लिख सकते हैं डायग्राम से. जब डायग्राम याद में है तो सब कुछ याद में है. All right, there are 5 sentences. Now let me try to. तो सब कुछ याद है.
All right, there are 5 sentences. Now let me try to give you a simple idea based on the diagram. चलो बेटा एक बार करें. Yes, इस diagram को देखो. When you see this diagram, we have to define what is solubility. बेटा in the preliminary schooling days, solubility का definition दे दिया गया था साइंस टीचर की तरफ से. टीचर क्या बोल रहा था बेटा? Solubility is defined as the highest concentration of solute. क्या बोला बेटा? Highest concentration of solute which remains dissolved in the solvent. What is solubility? बोलो बेटा मेरे साथ में. Highest concentration of solute which remains dissolved in the solvent. तो जब आप पढ़ लेंगे एक रिदम के साथ साथ, it will become a part of your permanent memory. Without any rhythm, without any interest, without any life, जब आप पढ़ लेंगे जैसा पढ़ते हैं वैसा भूल जाते हैं. बेटा याद में किसी चीज को रखने के लिए एक सिंपल रास्ता है. डेवलप द इंटरेस्ट, मेक योर ओन रिदम. That's all. So simple. चलो बेटा, solubility is defined as, मेरे साथ साथ बोलो, solubility is defined as the highest concentration of solute which remains dissolved in the solvent. Is the point? Highest concentration of solute which remains dissolved in the solvent is called as solubility. अब आइए नजर डालिए. कोई पूछ रहा था सर व्हाट इज द कार्बन सॉल्युबिलिटी इन डेल्टा फेराइट. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए डेल्टा फेराइट रीजन कैसा है बेटा. इस डायग्राम में डेल्टा फेराइट रीजन इज लाइक ए ट्रायंगल. ये वाला डेल्टा फेराइट रीजन जो है ये एक ट्रायंगल के जैसा है. इस ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट सबसे अधिक कार्बन कंटेंट को दिखा दे रहा है? 0.1%. दैट बिकम्स इट्स सॉल्युबिलिटी. दैट बिकम्स इट्स सॉल्युबिलिटी. का हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना. उस डेल्टा फेराइट रीजन में कौन सा पॉइंट सबसे अधिक कार्बन कंटेंट को दिखा दे रहा है? दैट पॉइंट बिकम्स सॉल्युबिलिटी. सो अब बोलो डायग्राम देखिए. सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन डेल्टा फेराइट इज 0.1%. Similarly, बोलो बेटा. Second statement, solubility of carbon in austenite phase is, austenite is like this pentagon. In this pentagon type of austenite region, which point is showing highest carbon content? 2%. Correct. That is solubility. Similarly, what is carbon solubility in alpha ferrite? In alpha ferrite, this is alpha ferrite region. ये पूरा alpha ferrite का region है. Which point is showing highest carbon content? 0.025%. Perfect. Next statement, what is carbon solubility in alpha ferrite at room temperature? कितना है? 0.008. अब आइए बेटा. What is carbon solubility in cementite? 6.67%. इतना इजी बन जाए यार. चलो लिखेंगे ये सारा आंसर्स को डायग्राम से. राइट. नाउ लेट अस राइट. Solubility of carbon delta ferrite is 0.1%. Solubility of carbon austenite is 2%. Solubility of carbon alpha ferrite is 0.025%. Solubility of carbon alpha ferrite at room temperature is 0.008%. Solubility of carbon in cementite is 6.67%. Correct? All right. Next comes another side heading. Some critical temperature lines. Some critical temperature lines. Some critical temperature lines and their significance. Some critical temperature lines and their significance. This is next side heading. In this next side heading, beta, so we come across 4 critical temperature lines. Let us try to write them. Here one line, number 1. Here one line, yes. Number 2. Here 2 line, number 3. Here 3 line. Next, number 4. Here CM line, right? ACM line. These are called as the critical temperature lines. तो हम लोग इसके बारे में लिखने से पहले हम ये 4 लाइंस को उस डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करेंगे. कहां कहां पर रहते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है. चलो बेटा आइए साथ साथ. लेट अस सी दिस डायग्राम. इन द डायग्राम आई एम रिप्रेजेंटिंग दोज लाइंस.
मेरे साथ साथ आप भी इन लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा। सो थोड़ा सा जगह बनाने के लिए मैं ये सारी चीज़ को निकाल दे रहा हूँ बेटा, बिकॉज यू ऑलरेडी नोटेड इट डाउन, राइट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी एडेड हियर, इसी के वास्ते मैं ये सब कुछ कर दिया हूँ, राइट। अब दूसरा किसी कलर से लिख दें। चलो, दिस लाइन at 727 degree centigrade, or horizontal line at 727 degree centigrade is called as A1 line. Then the line which is upper boundary of alpha plus gamma, this is called as A3 line. On its right side, the line going from 0.8 to 2% carbon content, this is called ACM line. Or let me try to show the so-called A2 line. I am trying to show that A2 line here as a new dotted line. Now I have introduced the new dotted line at 768 degree centigrade. ये जो dotted line मैं 768 degree centigrade में ड्राइंग कर दिया बेटा, this is called as A2 line. Now in the diagram, the horizontal line at 727 degree centigrade is A1. The dotted horizontal line at 768 degree centigrade is A2. The line going from 0.8% carbon content on the left side is the upper boundary of alpha plus gamma. If you want, you can identify the temperature also here, beta. The temperature here is 910 degree centigrade, right here. So line going from 0.8 to 910 on the left side is A3. The line going from 0.8% carbon content to 2% carbon content on the right side, this is called ACM line. Now, ये चार लाइंस का क्या नाम है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये देख लें बेटा, याद में सर। A1 line is called as लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। चलो बेटा लिखेंगे एक बार, बाद में दिखाएंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है बेटा। चलो राइट डाउन, A1 लाइन इज नोन एज, राइट डाउन, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। A1 लाइन इज नोन एज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। A1 लाइन इज नोन एज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। नो बेटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहता हूँ, A1 लाइन is a horizontal line at 727 degree centigrade. Yes or no? At 727 degree centigrade, did you write any invariant reaction? See in your notes. At 727 degree centigrade, did you write any invariant reaction? Yes sir. देखो तो. At 727 degree centigrade, देखो तो. You have written Utah reaction. A1 line is at 727 degree centigrade. At 727 degree centigrade, you have already written the reaction. What is the reaction? When Utah steels are taken, 0.8% carbon content वाला स्टील्स क्या है भाई? Utah steels हैं. So when Utah steels are taken and they are cooled, कहाँ से? देखो तो ये यही पर है ना. When Utah steels are cooled from above this A1 line to below this A1 line, इस horizontal के above कौन है? गामा है. कूलिंग करने से क्या होगा? It will transform into alpha plus cementite. What is this alpha plus cementite called? Perlite. तो यहाँ से एक सेंटेंस बना दो बेटा. When Utah steels are cooled from above A1 to below A1, क्या होगा? Austenite will transform into perlite. Yes or no? So this A1 line signifies austenite to perlite transformation in Utah steels upon cooling. बोल सकते हैं ना? हाँ, लिखो. Good. Come on, write down friends. Continue this A1 line discussion. This line signifies A1 line में continue करो. This line signifies the transformation of. This line signifies the transformation of austenite into perlite. Austenite into perlite. Upon cooling off Utah steels. Right? This line signifies the transformation of austenite into perlite upon cooling off Utah steels. Very good. Next. A2 line के बारे में लिखो. A2 line is known as next upon this line steels. Right? This line signifies the transformation of austenite into perlite upon cooling of Utah steels. Very good. Next. A2 line के बारे में लिखो. A2 line is known as A2 line is known as Curie point temperature line.
Curie point temperature line. A2 line is known as Curie point temperature line. This line signifies the magnetic to non-magnetic transformation. The magnetic to non-magnetic transformation. The magnetic to non-magnetic transformation in iron carbon system of alloys. In iron carbon system of alloys, comma, upon heating. Next, A3 line is known as, next one please. A3 line is known as upper critical temperature line. Upper critical temperature line for hypoelectroid steels. For hypoelectroid steels. A3 line is known as upper critical temperature line for hypoelectroid steels. Right? लिख लिया बेटा? वो लिखने के बाद please join me in the diagram once. Yes. For example, A3 line is this line. It is known as upper critical temperature line for hypoelectroid steels. इसका projection ले लें. If you take its projection, it will be falling in hypoelectroid steel. Therefore, हम लोग बोलते हैं इसको upper critical temperature line for hypoelectroid steels. Sir, if you take any hypoelectroid steel and heat it to a temperature above A3, try to show this line as an arrow upwards. Arrow upwards indicates heating. If you heat any hypoelectroid steel to a temperature above A3, बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बना दो. A3 के नीचे कौन है? In this composition, A3 के नीचे कौन है? अल्फा प्लस गामा है. Above A3 कौन है? Only गामा है. तो इसको कैसा समझना? When hypoelectroid steels are heated to a temperature above A3, A3 के नीचे रहने वाला अल्फा प्लस गामा गर्म करने से सिर्फ गामा बनता है. अल्फा प्लस गामा ट्रांसफॉर्म्स इनटू गामा. मतलब क्या है? This alpha will dissolve into arsenide. Alpha will also dissolve into arsenide. गर्म करने से ये वाला अल्फा जाके डिसॉल्व हो जाके वो भी गामा के जैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं. सो अल्फा, ये वाला गामा तो गामा ही रहा, लेकिन ये वाला अल्फा गामा के जैसा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. दैट मींस व्हेन hypoelectroid steels are heated to a temperature above A3, alpha ferrite will transform into arsenide. Alpha ferrite will transform into arsenide. तब क्या होगा? यार alpha ferrite is transforming into arsenide. This is already arsenide. दोनों मिलकर arsenide ही बनाएगा. Point is clear to you? Right now, continue the sentence. This line signifies, A3 line के बारे में कंटिन्यू करो बेटा. This line signifies, A3 line के बारे में कंटिन्यू करो. This line signifies the transformation of ferrite into austenite. This line signifies the transformation of ferrite into austenite upon heat. Of hypoelectroid steels. Upon heating of hypoelectroid steels. Now, next one. ACM line. Right now, ACM line is known as upper critical temperature line. Upper critical temperature line for hyperelectroid steels. Upper critical temperature line for hyperelectroid steels. Upper critical temperature line for hyperelectroid steels. Yeah. कंपल्सरी अब्बास, मैं लास्ट सेंटेंस में हूँ बेटा. ये लास्ट सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद मैं तुम्हारा क्वेश्चन को अटेंड करता हूँ. ओके, या कंटिन्यू करो बेटा. ACM line is known as upper critical temperature line for hyperelectroid steels. चलो एक बार देखेंगे बेटा डायग्राम में. कहाँ है? यहाँ है. राइट.
नाउ आई एम अगेन कंसंट्रेटिंग ऑन दिस एस्पेक्ट. ACM लाइन का प्रोजेक्शन ले लिया तो इट फॉल्स इन हाइपर हीटेड रीजन. देयरफॉर ACM लाइन इज कॉल्ड एज अपर क्रिटिकल टेंपरेचर लाइन फॉर हाइपर हीटेड स्टील्स. राइट. नाउ फॉर एग्जांपल, सर, if I take any hyper heated steel composition and heat it to a temperature above ACM, I heat it to a temperature above ACM, गर्म करता हूं तो क्या होगा? सब कुछ तुम्हारा आंखों के सामने है, देखना शुरू करो. चलो बेटा, बिलो ACM, ACM लाइन के नीचे कौन है बेटा? इंटरनल फेज स्ट्रक्चर, गामा प्लस सीमेंटाइट, गामा प्लस सीमेंटाइट. above ACM क्या है? गामा है. बोलो तो मतलब क्या है? When you take hyper heated steel and heat it to a temperature above ACM, क्या होने वाला है? गामा प्लस सीमेंटाइट will transform into गामा. करेक्ट. लेकिन एक पार्ट ऑलरेडी गामा है, वो दोबारा गामा बनने की जरूरत नहीं है. तो फिर कौन सा वाला ट्रांसफॉर्म होता? सीमेंटाइट will transform into आर्सेनाइट. करेक्ट है ना? कम ऑन, वेरी गुड. लिख दो बेटा. सीमेंटाइट will transform into आर्सेनाइट. तो यहां पर क्या लिखें? कंटिन्यू दिस सेंटेंस. ACM लाइन के बारे में कंटिन्यू करो. दिस लाइन signifies transformation of cementite into austenite. This line signifies transformation of cementite into austenite. Cementite into austenite upon heating of hyperheated steels. Upon heating of hyperheated steels. This line signifies the transformation of cementite into austenite upon heating of hyperheated steels. All right. Now, the topic on iron and carbon diagram is concluded. एक क्वेश्चन है मिस्टर फैज अब्बास की तरफ से. Let me attend on that question and then I want to add some 2 or 3 additional points related to iron and carbon diagram. Yeah, फैज अब्बास, एकदम बेटा A2 लाइन के बारे में. A2 line is known as Curie point temperature line. A2 line is known as Curie point temperature line. To stop. This line signifies the magnetic to non-magnetic transformation. The magnetic to non-magnetic transformation in iron carbon system of alloys. In iron carbon system of alloys, upon heating, right? This line signifies the magnetic to non-magnetic transformation in iron carbon system of alloys upon heating. All right, Faiz? Okay, good. अब वापस लौट कर आइए दोस्तों. I want to show you this diagram. एक तो पुराने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन पेपर्स का क्वेश्चंस मैं उठा ले रहा हूं बेटा. सर, सपोज मैं इतना ही भाग मैं दोबारा ड्राइंग करता हूं बेटा. यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स है, मैं इरेज कर दिया तो नेक्स्ट टाइम रीडर्स को इफेक्ट पड़ेगा. सो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, फटाफट मैं क्या करता हूँ, दोबारा जो मैं पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ और सेपरेट डायग्राम ड्राइंग करके वहाँ पर ऐड करता हूँ. चल, तुम्हारे पास डायग्राम नीटली है तो आप उसी डायग्राम में कंटिन्यू कर सकते हैं. चलो, सपोज फॉर एग्जाम्पल बेटा जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही डायग्राम ले रहा हूं. I hope you will be able to follow this. This is gamma region, right? This is alpha plus gamma. This is gamma plus cementite in the iron carbon diagram. So you understand this is 0.8% carbon content. और यहाँ पर alpha है. This is alpha plus gamma. Now, steels whose carbon content is 0.8%, they are called as what? Heated steels. आइए बेटा मेरे साथ साथ 3-4 क्वेश्चंस है, देखेंगे. When heated steels are cooled from above A1, is this A1 or not? This is A1. From above A1 to below A1, what's going to happen when they are cooled? Above A1 arsenic है, below A1 कौन रहता है? Perlite रहता है. Alpha plus cementite is nothing but perlite. Right. So when heated steels are cooled from above A1 to below A1, बोलो बेटा क्या होता? आर्सेनाइट will transform into perlite सर. कूलिंग करने में आर्सेनाइट बनेगा perlite. सर आप बोल रहा था they are reversible transformations. तो फिर क्या होना? अगर गर्म करते हैं बेटा, इसी स्टील को अगर गर्म करते हैं, बोलो गर्म करने से perlite should transform into austenite. Correct or not? So examiner can ask you either during cooling or during heating. So when heated steels are cooled from above A1 to below A1, बोलो क्या होता? कौन सा चेंज बनता? Austenite will transform into 100% perlite. Perlite के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं रहता. 100% ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर में perlite ही रहता है. करेक्ट है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? वापस आइए, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ. अब सपोज आई टेक हाइपोहेटेड स्टील, ये वाला कंपोजिशन मैं ले रहा हूँ जस्ट स्टार. देखो इसी लाइन के साथ साथ जाओ, दूसरी जगह में ढूंढने की जरूरत नहीं है. इसी लाइन के साथ साथ जाओ. When you cool this steel, what is this? Hypoheated steel को from high temperature to room temperature जब आप कूलिंग कर रहा है, देखो क्या कौन सा चेंजेस बनता है कूलिंग करने की प्रोसेस में. This is A3 line, right? The moment when you cross A3 line,
इस गामा में रहने वाला अल्फा जो रहता है वो प्रेसिपिटेट कर्व में बाहर निकलता है। इस गामा से अल्फा प्रेसिपिटेट कर्व में बाहर निकलता है आफ्टर क्रॉसिंग दिस A3 लाइन। देयरफॉर आर्सेनेट विल फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इनटू फेराइट प्लस आर्सेनेट। कूलिंग करने के प्रोसेस में क्या होता है, आर्सेनेट विल फर्स्ट ट्रांसफॉर्म आफ्टर क्रॉसिंग दिस लाइन, आर्सेनेट विल ट्रांसफॉर्म इनटू फेराइट प्लस आर्सेनेट। आइए, इफ यू कूल इट फर्दर, इस लाइन को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, दिस अल्फा फेराइट विल कूल डाउन एज इट इज, और ये जो आर्सेनेट है बेटा, ये जो आर्सेनेट है, राइट, दिस आर्सेनेट विल ट्रांसफॉर्म इनटू पेरलाइट, दिस आर्सेनेट विल ट्रांसफॉर्म इनटू पेरलाइट। Alpha will cool down as it is, but this arsenate will cool down below this particular A1 line. Arsenate should transform into perlite, बोली electrolyte reaction में लिख दिया था. So this arsenate will transform into perlite. So what will be the microstructure of hypoelectrolyte steel? Hypoelectrolyte steels, when they are cooled from high temperature to a temperature below A1, क्या होता बेटा? Arsenate will first transform into arsenate plus perlite, and then below A1, this perlite will remain as it is, but arsenate will transform into perlite. बोलो, what is the room temperature microstructure of? बोलो बेटा, room temperature में हाइपोइलेक्ट्रोलाइट स्टील्स का माइक्रोस्ट्रक्चर में कौन रहता, फेराइट प्लस पेरलाइट करता है। ये पेरलाइट कहां से आ रहा, आर्सेनिक ट्रांसफॉर्मेशन से। फेराइट विल बी a stable phase at low temperatures, but arsenic will not be a stable phase at low temperatures, therefore arsenic will transform into perlite। So microstructure of hypoelectrolyte steels at low temperatures is alpha ferrite plus perlite। चलो नेक्स्ट, सपोज लेट मी टेक अनदर कर्व। इफ आई टेक hypoelectrolyte steel, ये वाला कर्व, ये वाला काम ले रहा हूं बेटा। अब क्या होता है सर, इफ आई एम कूलिंग from higher temperature to room temperature, hypoelectrolyte steels में क्या होता है, arsenate will first after crossing this ACM line, arsenate से cementite precipitation बनता है, therefore arsenate will first transform into arsenate plus cementite, and after crossing this point, ये वाला cementite सीधा ऐसा ही आएगा, cementite तो cementite का जैसा ही आते हैं, cementite will become cementite only because at low temperature cementite is a stable phase। लेकिन इस लाइन को पार करने के बाद arsenate transforms into perlite, तो इस arsenate से बनेगा बेटा perlite। अब आइए, what will be the room temperature phase structure or microstructure of hypoelectrolyte steels? hypoelectrolyte steel में perlite plus cementite रहता है, hypoelectrolyte steel में ferrite plus perlite रहता है, electrolyte steel में perlite ही रहता है। Come on, can you repeat with me? electrolyte steel को कूलिंग करने से arsenate will transform into perlite, hypoelectrolyte steel को कूलिंग करने से arsenate will transform into ferrite plus perlite, hyperelectrolyte steel को कूलिंग करने से arsenate will transform into perlite plus cementite। राइट, तीन अलग अलग क्वेश्चंस को आंसर करिए बेटा। Next, last question, last information I wanted to give for today is like this बेटा। Let me show you here। ये जो arsenate है, this arsenate is, I apologize, right, ये जो cementate दिख रहा है बेटा, इसमें गामा प्लस cementate में जो cementate अब आइए, what will be the room temperature phase structure? or microstructure of hyper
हेलो। चलो भाई चालू करते हैं। हाय यशवी, थैंक यू। और क्या बोल रहे थे? हेलो गाइस, लाइक कर दो, सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कर दो। टेट्राइड स्टील्स, हाइपोटेट्राइड स्टील में पेरलाइट प्लस सीमेंटाइट रहता है, हाइपोटेट्राइड स्टील में फेराइट प्लस पेरलाइट रहता है।
यूटेक्टाइड स्टील में पेरलाइट ही रहता है। कम ऑन, कैन यू रिपीट विद मी? यूटेक्टाइड स्टील को कूलिंग करने से आर्सेनाइट विल ट्रांसफॉर्म इनटू पेरलाइट। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील को कूलिंग करने से आर्सेनाइट विल ट्रांसफॉर्म इनटू फेराइट प्लस पेरलाइट। हाइपरयूटेक्टाइड स्टील को कूलिंग करने से आर्सेनाइट विल ट्रांसफॉर्म इनटू पेरलाइट प्लस सीमेंटाइट। राइट? तीन अलग अलग क्वेश्चंस को आंसर कर दिया बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव फॉर टुडे इज लाइक दिस बेटा। लेट मी शो यू हियर। ये जो आर्सेनाइट है, दिस आर्सेनाइट इज, आई अपोलोजाइज बेटा। राइट, ये जो सीमेंटेट दिख रहा है बेटा, इसमें गामा प्लस सीमेंटेट में जो सीमेंटेट दिख रहा है, इसका एक अलग सा नाम है। इट इज कॉल्ड प्रोयूटेक्टाइड सीमेंटाइट। कॉल्ड प्रोयूटेक्टाइड सीमेंटाइट। दिस इज कॉल्ड प्रोयूटेक्टाइड सीमेंटाइट। राइट, the cementite is called proeutectoid cement. याद में रखो, proeutectoid cementite बोलते हो the cementite which is formed before reaching eutectoid temperature. The cementite which is formed before before reaching eutectoid temperature. The cementite which is formed before reaching eutectoid temperature. Eutectoid temperature reach करने से पहले जो सीमेंटेड बन चुका है, that is called as proeutectoid cementate. Similarly, इस लेफ्ट साइड में ये जो अल्फा फेज दिख रहा है बेटा, this is called as proeutectoid ferrite. This is called as proeutectoid ferrite बोलते हैं इसको. It's called proeutectoid ferrite. Right? The ferrite which is produced before reaching eutectoid temperature is proeutectoid ferrite. The cementite which is produced before reaching eutectoid temperature is proeutectoid cementate. ये वाला टर्मिनोलॉजी को याद में रखो बेटा, आगे, right? Now, there is one or two aspects. Occasionally we come across these things in the technical literature. वो भी मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ. There are certain miscellaneous transformations that we come across. As we talk about the miscellaneous transformations, sometimes examiners are focusing on this in the competitive examinations. Like for example, if you have noted all this, better, मैं एक extra point यहाँ पर add करना चाहता हूँ so that we can conclude this diagram completely. Some miscellaneous transformations. Some miscellaneous transformations. Miscellaneous binary transformations.
miscellaneous binary transformations. Let me try to show you here certain things which you don't see in iodine carbon diagram. They are called as monotectic transformation. Monotectic transformation. This is one transformation which you don't see in iodine carbon diagram. So, what is the meaning of monotectic transformation, sir? This monotectic transformation means a liquid A on cooling transforms into another liquid B plus a solid. A liquid A on cooling, so minus delta H. A liquid A on cooling transforms into another liquid B plus a solid. This type of transformation is called as monotectic transformation. Normally, this monotectic transformation takes place in non-ferrous alloy systems. For example, aluminum lead alloys, copper lead alloys, copper chromium alloys, zinc lead alloy systems, etc. ऐसा वाला alloys में monotectic transformation आप देख सकते हैं, but this monotectic transformation will not be seen in iron carbide diagram. दूसरा, second aspect sometimes that they are asking is about peritectoid transformation. Peritectoid transformation बोल के पूछता है बेटा. I'm giving you the meaning of this peritectoid transformation is that a solid A plus solid B. Let me take it as implication. Solid A plus a solid B on cooling gives rise to a third solid called as solid C. Solid A plus solid B on cooling gives rise to solid C. This is called as peritectoid transformation. This type of transformation is also not seen in iron carbide diagram. Some examples of non-ferrous alloys are being given here. जिसमें ऐसा वाला ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं. nickel zinc alloys, copper tin alloys, nickel molybdenum alloys, etc. ऐसा वाला alloy systems में peritectoid transformation बनते हैं. Peritectoid transformation बनते हैं. All right. So sometimes examiners are asking in PSUs, in IES examinations, I have seen this type of questions. Similarly, beta, occasionally they may ask in GATE examination also. They can पेरिटेक्टिक यूटेक्टॉइड जो आप पढ़ लिया आयरन कार्बाइड में, इसके साथ साथ ये दोनों को भी याद में रखना इंपॉर्टेंट है. दैट कंक्लूडेड दिस सेशन फॉर टुडे. कम ऑन, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी. लेक्चर खत्म. ऑफ थंबनेल कैसा लग रहा है बता देना एक बार. थैंक यू मिस महेश सिंह. आज ही एडिट किया. Yeah, friends, good evening. We are proceeding with the topic today related to heat treatment of steels. Right. We'll initially take up the discussion on conventional annealing, then go to normalizing, then proceed to what is known as hardening. Maybe near about 2 hours of time to 2 hours 10 minutes, we'll be in a position to come all the way up to the end of conventional hardening process. Then we may be parting for a dinner break at about 8 o'clock or 8:10. Then after we resume from the dinner session, try to proceed towards the topic on heat treatment of steels. And in the heat treatment of steels, the first topic that is being taken up is conventional annealing. Conventional annealing. This is the first heat treatment process that we are taking up. It is also known as full annealing process. It is also known as the full annealing process. Now, as and when we take up the discussion on heat treatment process, we will go in a systematic perspective. We will first know what are the purposes of the particular heat treatment process. Then we will try to know what will be the working principle of the heat treatment process. The third aspect is what are the consequences of such working principle in respective heat treatment processes. Because whatever the theory questions are appearing in the competitive examinations, they are normally getting distributed on these 3 topics. That is purposes,
working principle and consequences of a particular heat treatment process. So in the same way, we'll proceed in our instruction also. Accordingly, in respect of the first process called conventional annealing, we will initially take up what is known as the purposes of conventional annealing. Purposes of conventional annealing. Initially, we'll try to write down the purposes, and I request you to know that in this particular topic, we will be writing, we will be speaking, as well as explaining about the things. And you will be writing, you will be listening, and also you will be understanding. All these three things will go together because this is a purely theoretical topic for discussion. Alright, so let us take up the purposes of conventional annealing are, the first one, to relieve internal stresses, to relieve internal stresses. Questions can be on all these. To relieve internal stresses in cold worked components, or welded components. This is the first purpose. The second immediate purpose is to reduce the hardness of the material. To reduce hardness of the material. Reducing the hardness is technically called as softening. So we write that is to soften the material. To soften the material and increase its ductility. To reduce the hardness and increase ductility. This is the second purpose. And then the third purpose is to improve uniformity of or homogeneity of. कैसा भी लिख सकते हैं? To improve uniformity of phase distribution. To improve uniformity of phase distribution. To improve uniformity of phase distribution and make the material isotropic in properties and make the material isotropic in properties. This is the next immediate objective. Next, the point number 4 is, for purpose number 4, to refine the grain size. To refine the grain size. To refine the grain size. Next, number 5, to make the composition homogeneous. To make the composition homogeneous. To make the composition homogeneous. Right. Yeah, Mahesh, class has started, beta. Right? Okay. Right. The purposes. As we look into the conventional annealing process, dosto, in the previous question papers, in GATE, IES and other PSUs, wherever there were questions on annealing, there were questions on purposes. Therefore, these purposes must be there in your mind forever. Why at all do you do annealing of steels? These are the purposes for which the annealing has to be done. Okay, how do you achieve all these purposes? In order to achieve all these purposes, there is a working principle of the annealing process. That is what exactly I am now writing. That is, working principle or principle of annealing. Principle of annealing process is that hypoelectroid steel is heated to above A3. Hypoelectroid steel is heated to above A3, and hyperelectroid steel is heated to above A1 by 30 to 50 degrees centigrade, comma, held at that temperature for transformation to complete, to complete. Next, and it is followed by cooling to room temperature
in the furnace itself, cooling to room temperature in the furnace itself. This is what we call as a working principle of the conventional annealing process. Let us examine what is actually spoken in the principle. Hypoelectric steel is heated to above A3. Hyperelectric steel is heated to above A1 by about 30 to 50 degrees centigrade, held at that temperature for the transformation to complete, and it is followed by, it is followed by cooling to room temperature in the furnace itself. Now, normally, one doubt that comes in, sir, you are only talking about hyperelectric steels. Are you not going to any electrolyte steels? Friend, always remember, any heat treatment process for electrolyte steel must be performed above A1 only. That's the default function. Because only when you go to above A1, the perlite will start transformation into arsenic. Yes or no? And therefore, for electrolyte steel in any heat treatment operation, I am not talking to specially talk about it. So you need to, based on your knowledge of iron carbide diagram, that electrolyte steels are heated to above A1. That is a default statement in your mind. So how hyperelectric steels are heated to above A3, hyperelectric steels are heated to above A1 for the transformation to complete, and then it is held at the steel heated temperature for sufficient time, right? At a temperature 30 to 50 degrees centigrade above A3 or above A1. Then after the transformation is complete, the steel is cooled to room temperature slowly in the furnace itself. So whenever I talk about furnace cooling is considered as a dead slow cooling process. Now, if you implement this working principle, so what will be the consequences? What will be the consequences in conventional annealing? The consequences in conventional annealing will be that austenite will transform into coarse perlite. This is the microstructural transformation that will take place. Austenite will transform into coarse perlite. अभी ये 2 मिनट का ब्रेक है, इसको बात करनी है तो बात कर सकते हैं, चैट करने का है तो, लेकिन कोई है नहीं स्ट्रीम पे तो। Of the conventional annealing process by this working principle. And then, if you want to look for
what will be the different stages of changes in the microstructure and properties. Different stages of consequences or different stages of changes will be described by 3 steps. The different stages of the changes are described by 3 steps. They are called as recovery, recrystallization, and grain growth. Recovery, recrystallization, and grain growth are the 3 different stages. Of changes that will take place in microstructure and properties of the resulting steel. Now, always keep it in your mind. That whenever I talk about conventional annealing, what is the raw material for conventional annealing? Already I have mentioned here. If you see, the purpose number 1, to relieve the internal stresses in cold worked or welded components बोल के लिख दिया गया है. इसका मतलब है बेटा, the raw material which is taken for conventional annealing is the one which is previously subjected to cold working process or previously manufactured, fabricated by welding process. That is the raw material. Welded steel component or cold working steel component is the raw material on which this conventional annealing process is carried out. ये याद में रख लीजिए और आगे रखिए. Now when you say the consequences of conventional annealing are recovery, recrystallization and grain growth, sir, what do you mean by these stages? और कौन सा ये वाला स्टेजेस में कौन सा चेंजेस बनते हैं? लेट मी राइट देम हियर. रिकवरी का मतलब क्या हो सकता है? आई राइट हियर. नॉर्मली रिकवरी प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 500 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड. इस टेम्परेचर रेंज में रिकवरी बनते हैं. What do you mean by recovery, sir? Recovery, in the recovery stage, whatever changes will take place are being listed here. That is, no significant changes will take place in the microstructure. There will be no significant changes. In microstructure. There will be no significant changes in microstructure of steel. Hence, mechanical properties. अरे भाई बहुत दिन के बाद और क्या हाल है? Properties after recovery. Mechanical properties after a recovery stage. Mechanical properties after recovery stage will be same as that of cold worked metal. Will be same as that of cold worked. Same as that of the cold worked स्टील. कोल्ड वर्क स्टील में जैसा प्रॉपर्टीज रहता है वैसा ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रह जाते हैं. क्यों बोलते बेटा? प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रक्चर. और रिकवरी स्टेज में सिग्निफिकेंट शुरू में पढ़ाई अकेले आज थियरी टॉपिक चल रहा है. कीबोर्ड गेमर structural changes नहीं. Hence mechanical properties after recovery. वैसे तो मैं मटेरियल साइंस कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वो आयन कार्बाइड डायग्राम कर रहा था, तो उसका थोड़ा थियरी पार्ट है. इंजीनियरिंग में थियरी बहुत बोर होती है, कुछ प्रैक्टिकल रहा तो मज़ा आता. है. इसी के वास्ते जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कोल्ड वर्कड मटेरियल स्टील में था वैसा ही प्रॉपर्टीज रह जाएगा इवन आफ्टर रिकवरी स्टेज. राइट. नेक्स्ट. तो फिर क्या होता है सर? रिकवरी का क्या सिग्निफिकेंस है? रिकवरी स्टेज में बेटा इंटरनल स्ट्रेसेस रिलीव होती है. इंटरनल स्ट्रेसेस आर रिलीव्ड. ये इंटरनल स्ट्रेसेस कहां से बन गया सर?
जो इंटरनल स्ट्रेसेस कंपोनेंट में इंड्यूस कर दिया गया है कोल्ड वर्किंग की तरफ से, those internal stresses will be relieved. Those internal stresses will be relieved in the recovery stage. So internal stresses will be relieved. Internal. अरे अभी थंबनेल कैसा लग रहा है अभी का? नया वाला बनाया मैंने, थोड़ा एडिट किया उसको। Stresses will be relieved. एक पॉइंट है बेटा, और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। बेटा आप सुना होगा स्ट्रेस करोशन बोल के एक फिनोमेनन के बारे में। Stress corrosion is the corrosion which takes place in the components either due to externally applied stresses or due to internal stresses. याद में रख लीजिए, when a material is subjected to external stresses or it is induced with internal stresses, its corrosion resistance will decrease. It gets corroded very fast in the presence of external stresses or in the presence of internal stresses. This phenomenon is called as stress corrosion. Right. Matter of importance is corrosion की वजह से बेटा ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, मटेरियल अपना डक्टिलिटी को खो जाते हैं, मटेरियल अपना डक्टिलिटी को खो जाते हैं। इन करोजन बनने का ये कारण कौन है? ये कारण है either externally applied stresses or internal stresses. Now when you relieve these internal stresses by recovery, जो खो गया डक्टिलिटी रहता है बेटा, वो वापस लौट कर आते हैं। इसी के वास्ते डक्टिलिटी विल इंक्रीज। सो when internal stresses are relieved, डक्टिलिटी वापस लौट कर आते हैं और करोजन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाते हैं। Therefore we write here, ductility will increase in recovery stage. Ductility will increase, comma, corrosion resistance will increase. Corrosion resistance will increase. Right? These are the changes that are going to essentially take place in the so-called recovery stage. Next, in the recrystallization stage, if you examine, when does this recrystallization take place? बोल के देखिए, नॉर्मली स्टील में रिक्रिस्टलाइजेशन बनते हैं between 625 to 675 degrees centigrade temperature range. In this temperature range, right? In this temperature range, recrystallization is going to take place. Now, what do you mean by this recrystallization? Let us write. Recrystallization means recrystallization means formation of new, stress free. अरे मेरा नाम है new, stress free, equiaxed fine grain structures from coarse columnar grain structure, coarse columnar grains of previously cold worked metal, previously cold worked metal. इसको थोड़ा सा समझ लेंगे. Let us try to draw a schematic here. Suppose this is the cold worked steel. In the cold worked steel, if you examine the microstructure, the microstructure will show elongated grains, and these grains which are elongated in the direction of rolling, they are called as coarse columnar grains. These are called as the coarse columnar grains. All these grains appear to be elongated in the direction of cold rolling. That's how the microstructure will be. So let me write the name of this microstructure. The name of this microstructure is coarse columnar grain structure. This is called coarse columnar grain structure. This happens to be the characteristic of cold worked metals. This structure happens to be the characteristic of cold worked metals. So in the recrystallization stage in conventional annealing, these grains, from this grain structure, new grains will start taking their birth. नया grains का development होता है यहाँ पर. So new grains will start taking birth right from the grain boundaries, starting from grain boundaries, coarse grains, new grains, small sized grains, fine grains, equiaxed grains, stress-free grains will start taking birth. This process is what is called as recrystallization. So recrystallization means from each one of the coarse columnar grains, new stress-free, equiaxed, fine grain structures are going to be produced. When I say stress-free, I mean the grains which are free from residual stresses. नया grains का development होता है, new grains which are free from residual stresses. Equiaxed बोलने में मतलब है all the grains will have more or less the same average size in different directions. When the average size of the grain is same in multiple different directions, वैसा वाला grain को हम बोलते हैं equiaxed grain, right? और fine grains बनते हैं. So naturally, what is our expectation? When coarse grain structure is replaced by fine grain structure, it means there is significant change in the microstructure.
जब माइक्रोस्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट चेंज बन गया है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा चेंज आते रहेंगे बोले, राइट? सो इन द रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द माइक्रोस्ट्रक्चर एज वेल एज इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और आइए, ये एक एक्सपेक्टेशन है बेटा, ये एक एक्सपेक्टेशन है, व्हेन कोर्स ग्रेन्स आर रिप्लेस्ड बाय फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर वी एक्सपेक्ट दैट द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस मस्ट इंक्रीज, बेटा, राइट? Because coarse grains are replaced by fine grains, we expect that the strength and hardness must increase. In reality, it will not increase. The reason is not the fine grain structure. Reason is not the fine grain structure. Rather, along with the replacement of coarse grains by fine grain structure, some more additional effects will come. What are those additional effects, sir? Those are the things which I am writing them here. So, apart from this type of structural change, but apart from this type of microstructural change, there will be elimination of interstitial defects. So I write here, interstitial defects are eliminated. Interstitial defects are eliminated. Interstitial defects are eliminated. Next, dislocations are drastically decreased. Dislocations are drastically decreased in recrystallization stage of annealing. Dislocations are drastically decreased. Dislocations are drastically decreased, and then internal stresses are further decreased. Internal stresses are further decreased. Further decreased. Now these are called as additional effects. These are called as the additional effects. So in the recrystallization stage, what are the things that are going to happen? Number one, grain structure will change. कैसा चेंज होता? कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर इज रिप्लेस्ड बाय फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इतना ही होता है क्या? अगर इतना ही होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विल इंक्रीज बोल के। इतना ही नहीं होता बेटा, और भी एडिशनल इफेक्ट्स है। व्हाट आर दे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर एलिमिनेटेड, dislocations are drastically decreased, and internal stresses are further decreased. Due to these additional effects, second, third and fourth additional effects, instead of the strength and hardness increase, strength and hardness will decrease. Therefore we write here, due to these changes, strength and hardness will decrease. Strength and hardness will decrease. Strength and hardness of the steel will decrease. At this stage, एक डाउट आते रहते हैं, कंपेयर टू व्हाट? स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विल डिक्रीज कंपेयर टू व्हाट? बेटा हमारा जो रॉ मटेरियल ले लिया गया था वो था कोल्ड वर्कड स्टील। रिकवरी स्टेज में कोल्ड वर्कड स्टील का मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज नहीं बना। अब क्या हो रहा है? स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विल डिक्रीज आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन कंपेयर्ड टू प्रीवियस स्टेज। प्रीवियस स्टेज में कौन था? कोल्ड वर्कड मेटल का प्रॉपर्टी था। सो कंपेयर टू कोल्ड वर्कड स्टेज, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विल डिक्रीज। ये बात है यहां पर। आगे नेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट, यस बेटा यहां पर मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस, लेट मी ट्राई टू गिव यू some emphasis here, maybe 3 times or so, exactly इसी के ऊपर से क्वेश्चन आया था बेटा IAS एग्जामिनेशन में। रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग रिजल्ट्स इन वाज द क्वेश्चन, और रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन बोल के क्वेश्चन आया था। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विल इंक्रीज, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विल डिक्रीज, ऐसा बहुत सारा चॉइसेस दे दिया गया था। स्टूडेंट्स वर पजल्ड, अरे स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस कैसा डिक्रीज होता है? बेटा उनका माइंड में क्या था? अरे रिक्रिस्टलाइजेशन बोले तो कोर्स ग्रेन्स आर रिप्लेस्ड बाय फाइन ग्रेन्स, राइट? तो जब फाइन ग्रेन्स बनता है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बढ़ना है ना बेटा, एक ही इफेक्ट नहीं बनता, दूसरा तीसरा चौथा भी इफेक्ट मिलता है। सो ये वाला सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है? स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस घट जाती है। कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर्ड टू कोल्ड वर्कड स्टील। ये बात नजर में रखना। आगे सर, व्हाट इज द थर्ड स्टेज? इन द थर्ड स्टेज वी राइट हियर, इट इज कॉल्ड ग्रेन ग्रोथ। थर्ड स्टेज इज कॉल्ड ग्रेन ग्रोथ, राइट? ये पॉइंट हम याद में रखेंगे बेटा। ग्रेन ग्रोथ इज टाइम डिपेंडेंट एंड टेंपरेचर डिपेंडेंट फिनोमेनन। टाइम डिपेंडेंट एंड टेंपरेचर डिपेंडेंट फिनोमेनन मतलब क्या होता है सर? If you are going by slow cooling or slow heating, you can observe grain growth. If you are going by rapid cooling process, you will not observe this grain growth, because grain growth is a time dependent phenomenon and a temperature dependent phenomenon. आइए आगे डिस्कस करेंगे। कब बनता है सर ग्रेन ग्रोथ? ग्रेन ग्रोथ बोलने का मतलब क्या है? फाइन ग्रेन्स मस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू कोर्स ग्रेन्स, राइट? बट व्हेन डज दिस फाइन ग्रेन टू कोर्स ग्रेन कन्वर्शन टेक प्लेस? Fine grain to coarse grain conversion will take place, number one, when you are heating the material to high temperatures. Why? Grain growth is a temperature dependent phenomenon. Therefore, when you heat the material to high temperatures, fine grains get converted into coarse grains. दूसरा, sir, suppose मैं heating नहीं कर रहा हूँ, I am not heating from low temperature to high temperature. किसी एक high temperature में उसी constant temperature में ज़्यादा समय तक मैं होल्ड करके रख दिया. Suppose I am holding the material at a constant temperature for a long time. Then what will happen?
Will the grain growth take place or not? Answer is yes, grain growth will take place. Why? Because grain growth is a time dependent phenomenon too. If it is only temperature dependent, गर्म करने से ही होता है. It is not only time dependent, it is not only temperature dependent, it is also time dependent. बोल तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर में ज्यादा समय तक होल्डिंग करके रख देने से भी ग्रेन ग्रोथ होता है. तीसरा बोल रहा बेटा, सर इन annealing process what are you doing? In conventional annealing we are letting go grain. Then what will happen? Will the grain growth take place or not? Answer is yes, grain growth will take place. Why? Because grain growth is a time dependent phenomenon too. If it is only temperature dependent, गर्म करने से ही होता है. Not only time dependent, it is not only temperature dependent, it is also time dependent. बोल तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर में ज्यादा समय तक होल्डिंग करके रख देने से भी ग्रेन ग्रोथ होता है. तीसरा बोल रहा बेटा, सर इन annealing process what are you doing? In conventional annealing we are going to cool the steel in the furnace very slowly. So furnace cooling is adopted. In the furnace cooling process, each grain is allowed to be at high temperature for a sufficiently long period of time. So due to furnace cooling process, each grain will be experiencing the heating effect for a reasonably long period of time. That is the reason why grain growth will take place as a function of temperature. Hence we write here, in the grain growth stage, whatever the fine grain structure was produced earlier in recrystallization stage, those fine grains get converted into coarse grains. The fine grains get converted into coarse grains. When fine grains are converted into coarse grains, what's going to happen? Number of grains and grain boundaries per unit area will decrease. When number of grains and grain boundary per unit area decreases, beta, follow. Strength and hardness of steel will decrease. So as a consequence of this conversion, strength and hardness of steel will decrease. Strength and hardness of steel will decrease. आगे. Sir, as the strength and hardness decreases, what happens to machinability? Machinability will increase. Because steel strength and hardness is decreased, machinability will increase. Those are the consequences that we come across. In the conventional annealing process. Now friends, if you are holding the stick, yeah. If you are holding the steel after recrystallization temperature, if you are holding the steel in the furnace itself, yeah, you are holding the steel until what time? Until the component cools back to room temperature. इसी के बाद से grain growth हो रहा है. You may be heating, you may not be heating. If you heat, grain growth will invariably happen. Even if you don't heat, if you are maintaining the steel
At that temperature, for a long period of time in the furnace, as a function of time, grain growth will take place. As a result, number of grain boundaries will decrease per unit area, and strength and hardness of steel will decrease, and machinability will increase. Now, these are the general, effects or consequences of what is known as conventional annealing. Right. Now, there are certain types of annealing that we have to examine. Types of annealing. Types of annealing is now being covered. Number one, we call it as stress relief annealing. Stress relief annealing. Stress relief annealing. Number two is called recrystallization annealing. Recrystallization annealing. Recrystallization annealing. Number three, process annealing or in process annealing. Process annealing बोलते हैं या in process annealing बोल के भी बोलते हैं. Next, isothermal annealing. Isothermal annealing. Then we come across बोलो भाई, diffusion annealing. बोलो बिंदास. Diffusion annealing. Then there is what's called as spheroidization annealing. Spheroidization annealing. Right. These are the different types of annealing. अरे अक्षय, हाय, क्या बोलते, क्या कर रहा था अभी? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? अभी तो नोट्स बना रहा हूँ, तो नोट्स बना रहा हूँ और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो अभी तो ठीक शुरू है, क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं. मतलब एक दो होते हैं जो डाउट आता है, तो वो भी क्लियर हो जाते हैं. अगर सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कर देना. डिफ्यूजन एंड विच ईयर यू टारगेटिंग फॉर? 2026, एक साल के बाद. मैंने अभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट किया, इसलिए वो सिलेबस कवर नहीं होगा ना, तो उस हिसाब से तो 2026 में देना पड़ेगा. डन ब्रो, सब्सक्रिप्शन, थैंक यू. मेन चीज़ तो पहले तो नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपन मतलब एक चाहिए ना, बेस लेवल चाहिए ना कोई भी कंसेप्ट के लिए. तो नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा पहले पूरे सब्जेक्ट. टोटल 25 सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज़ और टेक्निकल मिला के. अभी मेरा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के नोट्स बन गए मेरे. 3 महीने पहले स्टार्ट किया था मैंने, तो 3 महीने में 5 सब्जेक्ट हो गए. That we shall discuss ahead. डिनर नहीं, आज वो अपना कोई वो माता का क्या बोलते खाना है बाहर, तो उधर जाऊँगा, घर पे नहीं खाऊंगा आज. What are these types of annealings? What are their purposes? As you see, the names themselves, stress relief
मीन्स रिलीविंग द इंटरनल स्ट्रेस। वो ये कारण है एनीलिंग करने के लिए, इसी के बाद इसको बोलते हैं स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग इज मेंट फॉर अचीविंग कन्वर्शन ऑफ कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर्स इनटू फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स, hence it's called रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग। Process annealing is meant for improving ductility. Isothermal annealing and spheroidization annealing are meant for improving meshnability. Diffusion annealing is meant for improving uniformity of chemical composition throughout the material by diffusion processes. Come on, friends, let us try to study them in detail. Stress relief annealing. As the name itself indicates, yes, as the name itself indicates, stress relief annealing में महाराष्ट्र क्यों किया जाता है? नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, बोले तो इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। चलो एक बार इसका पर्पस जानकारी में आया। देखो बेटा, स्ट्रेसेस रिलीव करना है तो शुरुआत में बेटा जो कोल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स में या वेल्डेड कंपोनेंट्स में रहने वाला रेसिडुअल स्ट्रेसेस या इंटरनल स्ट्रेस रहता है, उनको निकाल देने के लिए रिकवरी स्टेज मोर देन सफिशिएंट है। तो क्या करना? हीट द स्टील, कमान यहां पर सब कुछ है, हीट द स्टील अप टू 500 टू 550 मोर देन है, उनको निकाल देने के लिए प्रोसेस या इंटरनल स्ट्रेस रहता है, उनको निकाल देने के लिए रिकवरी स्टेज मोर देन सफिशिएंट है। तो क्या करना? हीट द स्टील, कमान यहां पर सब कुछ है, हीट द स्टील अप टू 500 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वहां तक गर्म करने के बाद होल्डिंग करके रख दो। उस टेम्परेचर में होल्डिंग करके रख दिया तो क्या होता? नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन माइक्रोस्ट्रक्चर विल टेक प्लेस, ओनली इंटरनल स्ट्रेस आर रिलीव्ड, डक्टिलिटी विल इंक्रीज। बोल यहां पर लिखा गया नहीं? डिस्क्रिप्शन में लिखा है, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। बोले तो इफ यू जस्ट वो UPI ID है ना, तो वो नंबर है। implement this recovery stage, बेटा वो बनेगा स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। लेकिन अंतर क्या है सर? व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन रिकवरी स्टेज ऑफ कन्वेंशनल एनीलिंग एंड स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग? बेटा रिकवरी होता है फर्नेस के अंदर, जब कंपोनेंट फर्नेस के अंदर है रिकवरी होता है। लेकिन स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग में इस टेम्परेचर गर्म करने के बाद 500 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके वहां पर ज्यादा समय तक होल्डिंग करके रख देते हैं। होल्डिंग करने के बाद the component is slowly cooled back to room temperature in open air. Open air cooling is involved in stress relief annealing. Furnace cooling is involved in recovery stage. This is the sensitive difference. तो याद में रख लीजिए दोस्तों, बहुत सारी जगह में annealing बोलने में people get attached to furnace cooling. Annealing बोलते बोलते ही people get attached to furnace cooling. लेकिन कौन सा annealing में furnace cooling करते हैं? Only conventional annealing. Only conventional annealing. बाकी सारा जो मैं types of annealing बोल के यहाँ पर लिख दिया बेटा, in those different types of annealing, जो बोलने में people get attached to furnace cooling. Annealing बोलते बोलते ही people get attached to furnace cooling. लेकिन कौन सा annealing में furnace cooling करते हैं? Only conventional annealing. Only conventional annealing. बाकी सारा जो मैं types of annealing बोल के यहाँ पर लिख दिया बेटा, in those different types of annealings, in none of them there is furnace cooling. In all these types of annealing, there is air cooling only. Annealing temperature से ओपन एयर में कूलिंग कर दिया जाता है। वैसा करने से क्या होता है बेटा? स्ट्रेस रिलीफ होता कोल्ड वाटर कंपोनेंट में और वेल्डेड कंपोनेंट्स में स्ट्रेस रिलीफ होता है। दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। और आगे सर व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग? एज वी सी द सेकंड वन, व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग? बुक देखेंगे बेटा सेकंड वन, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट रिक्रिस्टलाइजेशन कराना है। याद में रख लो, रिक्रिस्टलाइजेशन मींस बेटा क्या लिख दिया था यहाँ पर? ऑलरेडी हैव द नॉलेज अबाउट इट। देखो रिक्रिस्टलाइजेशन मींस क्या लिखा? कन्वर्शन ऑफ conversion of coarse columnar grain structures into new stress free equiaxial fine grain structures. अपना पढ़ाई के बाद में देखता हूँ थोड़ा, वो ना उससे तो कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम मोबाइल से। कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर कहाँ से मिलते हैं? दो तरह का प्रोसेस है बेटा, एक है कोल्ड वर्किंग, दूसरा है वेल्डिंग। वेल्डेड जॉइंट्स आल्सो विल हैव कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर्स नियर अबाउट द बेस मेटल प्लेट, near about the base metal plate, right? Welded joints also will have coarse grain structures near about the base metal plates. Therefore, we understand here that, yeah, whenever you want to go for recrystallization, the recrystallization annealing, the raw material must be previously cold worked component or previously welded component. बाद में क्या करें सर? रिक्रिस्टलाइजेशन कराना हमारा लक्ष्य है,
So up to what temperature should I heat? Up to a temperature of 625 to 675 degree centigrade. Up to a temperature of 625 to 675 degree centigrade, कंपोनेंट को गर्म करना पड़ता है. यहाँ तक गर्म करने के बाद होल्ड इट एट द टेम्परेचर. होल्डिंग टाइम क्यों देना है? बिकॉज रिक्रिस्टलाइजेशन इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना. हाई टेम्परेचर में ज्यादा समय तक होल्डिंग करके रख दिया तो ज्यादा वॉल्यूम में रहने वाला कोर्स ग्रेन्स फाइन ग्रेन्स का जैसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. इसी के वास्ते होल्डिंग टाइम देना है. ओके, होल्डिंग टाइम दे दिया, पूरा वॉल्यूम में कोर्स ग्रेन टू फाइन ग्रेन कन्वर्शन हो गया. बाद में कूल द स्टील from that temperature, cool the steel to room temperature in open air. In open air, that is called as recrystallization annealing. So when you go for this recrystallization annealing, what is going to happen? Grain structural modification will take place. Due to microstructural modification, there will be changes in the dislocation density. Dislocation density will get decreased. Internal stresses are further decreased, and therefore the strength and hardness of the steel will decrease. Those are the purposes of recrystallization annealing. Correct, DP Yadav. Right. Next. Sir, process annealing बोले तो क्या? You are going to study the process annealing as a part and parcel of wire drawing. So let me again just brush up the so-called process annealing. You must be studying what is called as wire drawing process, rod drawing process बोल के आप मेटाफॉर्मिंग में पढ़ते रहते हैं बेटा. याद में रख लीजिए, wire drawing process or rod drawing process is always invariably cold working process. Always invariably cold working process. Number two, if you want to reduce the diameter of a given rod into a wire, let us say for example, you are having the initial raw material is 12 mm diameter wire, 12 mm diameter rod, you want to convert into a wire of 1 mm diameter. This 12 mm to 1 mm diameter conversion or diameter reduction is not achieved in one time drawing of the rod through the die. It is achieved by stage reducing the area of cross section or the diameter of the rod. Let me try to show it here. For example, this is the initial raw material which you are having with you, the initial rod having 12 mm diameter. Right? It is initially reduced to some extent to a smaller diameter. Then it is reduced in the second stage further. Then in the next stage, it is further reduced in diameter. In the next stage, it is further reduced in diameter. Right? That is how in the last stage, let's say for example, you are going to have 1 mm diameter rod. Now, do you know that how this particular process takes place? This process takes place in what are called as drawing dies. Drawing dies. This is the drawing die. This is the second stage drawing die. This is third stage drawing die. Third stage drawing die. This is fourth stage drawing die. Right. Like that, the diametral reduction takes place stage by stage. This type of drawing is what's called as series drawing or tandem drawing. Series drawing or tandem drawing बोलते रहते हैं. When the diameter of the rod is gradually reduced, stage by stage, the process is called as series drawing or tandem drawing. In this process, what happens? Drawing dies are arranged side by side. Several dies are arranged. Now look here, friends. Stage by stage, क्या होने का possibility है? If you go stage by stage, by diametral reduction by cold working, stage by stage internal stresses बढ़ता जाता रहता है. So किसी न किसी एक stage पर maximum internal stresses must have been induced into the material so that without relieving those internal stresses, if you draw any further, वो wire टूट जाने की संभावना ज़्यादा रहता है. But we don't want to fracture the wire. We want to reduce the diameter and we want to draw the wire over longer lengths. Finer diameter wires must be drawn over longer lengths without fracturing. कैसा कर पाओगे? बोले तो intermittently by using process annealing. ये process annealing में क्या करता है? Let's say for example, after 3 dies or 4 dies, according to American Society for Testing of Materials standards, ASTM standards, after 2 dies or 3 dies, come on, an annealing furnace is kept here. What you are seeing in pink color here is the annealing furnace. This is annealing furnace. So after the 3rd die, the wire which is coming from the 3rd stage of the die is not allowed to enter through the 4th die directly. What happens is, it is allowed to first enter into an annealing furnace. Now, the wire is drawn slowly due to slow cooling process. What happens, friends? Simultaneously, this wire, which is released from the 3rd stage die, will be passing through the annealing furnace. After going through annealing furnace, internal stresses will get relieved, and with the internal stresses relieved, ductility recovery हो जाती है. So with improved ductility, the wire will enter the 4th stage die. जब ductility recovery कर दिया गया है बेटा, without fracture, the wire can be drawn into smaller diameters over longer lengths. So जब आप किसी wire drawing process में intermittently ductility को restore करना चाहते हैं, intermittently internal residual stress को relieve करके ductility को recover करना चाहते हैं, वैसा वाला purposes के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे process annealing. Like it is used in wire drawing processes. Like it is also called as in-process annealing. In which process? In wire drawing process, intermittently, if you carry out annealing for relieving the residual stresses and to recover ductility,
वैसा वाला पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दिया जाने वाला एनीलिंग को बोलते हैं प्रोसेस एनीलिंग और इन प्रोसेस एनीलिंग और इंटरमिटेंट एनीलिंग। राइट, देन कम्स अनदर annealing known as isothermal annealing. Let us try to see what exactly is the purpose of this isothermal annealing. Sir, I write here isothermal annealing. Isothermal annealing. Isothermal annealing. It is used to improve machinability of. It is used to improve machinability of medium carbon steels. Friends, when I normally talk about medium carbon steels, I mean the steels whose carbon content is from 0.3 to 0.6%. Steels which contain carbon in the range of 0.3 to 0.6% are called as medium carbon steels. वैसा वाला steels में क्या होता है सर? Comparing between low carbon steels and medium carbon steels will have more amount of carbon content. Medium carbon steels will have more amount of cementite content. Now, when there is more amount of cementite content in medium carbon steels, that cementite phase will be very hard and brittle phase. Since it is a hard and brittle phase, it will reduce the machinability of the corresponding steel, because hard phases को machining करने के process में बेटा power consumption बहुत ज़्यादा रहता है, इसी के वास्ते machinability कम रहता है. So in medium carbon steels, the major challenge for machinability is presence of cementite phase. Right? Now you can always ask me, sir, is cementite hard under all circumstances? No beta. Cementite is normally in the orthorhombic crystal structure. Cementite crystal structure is orthorhombic. Now, normally in the microstructure of these medium carbon steels or high carbon steels, cementite will be in the form of sharp needles. Cementite will be in the form of sharp needles in the microstructure of steel. अब क्या करना? As long as this cementite is in the form of sharp needles, it will be a hard and brittle phase. As long as cementite is in the form of sharp needles, it will be a hard and brittle phase. तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ हीट ट्रीटमेंट करके हम इस नीडल लाइक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीमेंटेट को चेंज कर देंगे. चेंज करने से क्या होता और वो चेंज कैसा कर पाएंगे सर? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल एनीलिंग. आइए, सो आइसोथर्मल एनीलिंग प्रोसेस में लेट मी टेल यू, सपोज आई एम ट्राइंग टू शो यू टेंपरेचर ऑन वाई एक्सिस. ये वन टेंपरेचर इज दिस वन. जो मीडियम कार्बन स्टील तुम्हारे पास है, ट्राई टू टेक दिस मीडियम कार्बन स्टील एंड हीट इट टू अ टेंपरेचर मच अबव A1. Take the medium carbon steel and heat it to a temperature much above A1, and then after going to much above A1 temperature, rapidly cool it down to a temperature below A1. Rapid cooling from much above A1 to below A1, just below A1 तक आप rapid cooling कर दीजिए. आप rapidly cooling, hold the steel at that constant temperature for sufficiently long time. You are holding the steel at this constant temperature for sufficiently long time. Hence, this is called as isothermal annealing. Sir, if you do this particular process, what's going to happen? बेटा बहुत ज़्यादा समय, मे बी 5 hours, 6 hours, 7 hours तक होल्डिंग करके रखना पड़ता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन कार्बन कंटेंट इन स्टील. जब आप इतना ज़्यादा समय तक होल्डिंग करके रख देंगे बेटा, जो नीडल लाइक सीमेंटाइट है, दैट नीडल का जैसा रहने वाला सीमेंटाइट, इट विल चेंज इट्स कॉन्फिगरेशन बिकॉज एट हाई टेम्परेचर्स सीमेंटाइट इज नॉट गोइंग टू हैव स्टेबल स्ट्रक्चर. देयरफॉर ड्यू टू इंस्टेबिलिटी इट विल ट्राई टू चेंज इट्स कॉन्फिगरेशन फ्रॉम the so-called needle-like configuration to spherical configuration. In the spherical configuration, cementite is known as spheroidite. Spheroidite means spheroidal cementite. Now, in the spherical form, cementite behaves like the softest phase. When a hard needle-like cementite is converted to a soft phase, बोलो बेटा machinability बढ़ेगा या नहीं? That is why machinability will increase here. तो आइए देखेंगे यहाँ पर क्या होता है. Due to this thermal cycling process, this isothermal annealing process, क्या होता बेटा? Needle-like cementite is converted into spherical form. Needle-like cementite is converted into spherical form. Right? It is in the spherical form. It is known as spheroidite. In the spherical form, it is known as a spheroidite. Next, spheroidized structures are softer than annealed structures. Spheroidized structures are softer than annealed structures. They are softer than annealed structures. That means softness will increase, hardness will decrease. Hence, because softness is increased, hence machinability will increase. Hence machinability will increase. Now, बेटा जैसा बोला गया है, ये इतना आसान से होने वाला चीज तो नहीं है. क्यों बेटा?
बिकॉज एट दिस हाई टेम्परेचर जस्ट बिलो A1 आप उस कंपोनेंट को बहुत ज्यादा समय तक कांस्टेंट टेम्परेचर में होल्डिंग करके रखना पड़ता है, करेक्ट है ना? आई टोल्ड यू 5 और 6 और 7 आवर्स उतना ज्यादा समय तक होल्डिंग करके रखना पड़ता है। When you are holding the component at high temperature for a longer time, बेटा, there are other issues. Oxidation, decarburization नामक दूसरा प्रॉब्लम्स बनते रहते हैं, grain coarsening नामक दूसरा प्रॉब्लम्स बनते रहते हैं। Therefore, people always try to reduce the total time. What is the biggest disadvantage of this process? Biggest disadvantage of this process is the time taken for spheroidization is too very long. So people try to know हम कैसा करके इस spheroidization time को कम कर सकते हैं। This time is spheroidization time. स्टेरॉइडाइजेशन टाइम कम करने के लिए क्या किया गया बेटा? एक रास्ता उठाया गया अल्टरनेटिवली। जो मीडियम कार्बन स्टील है तुम्हारे पास, व्हाटएवर मीडियम कार्बन स्टील इज देयर विथ यू, दैट मीडियम कार्बन स्टील कैन बी सब्जेक्टेड टू परमानेंट डिफॉर्मेशन बिफोर स्टेरॉइडाइजेशन अनिलिंग। स्टेरॉइडाइजेशन अनिलिंग करने से पहले मीडियम कार्बन स्टील को ले जाकर कोल्ड वर्किंग करा दो। कोल्ड वर्किंग कराने से क्या होता है? ड्यू टू कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बिफोर स्टेरॉइडाइजेशन, सॉरी बिफोर आइसोथर्मल अनिलिंग, if you go for cold working process, what's going to happen? Due to cold working process, the internal grain structure will undergo distortion, lattice structure will undergo distortion, therefore lattice potential energy will increase. Due to cold working process, when the lattice potential energy has already increased, the amount of external heat energy support that is required for phase transformations will get reduced. Therefore, within a short period of time, transformation बन जाएगा। So cold worker component को ले जाके previously cold worker medium carbon steel को ले जाके जब आप isothermal annealing कराएंगे, उसमें ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी रहने की वजह से कम समय में नीडल का जैसा रखने वाला सीमेंटाइट स्फेरिकल फॉर्म में बन जाएगा। Therefore, the spheroidization time can be reduced by previously cold working the medium carbon steel. बोल के टेक्नोलॉजिस्ट ने एक alternative solution लाया है बेटा। That is how isothermal annealing has become successful with medium carbon steel for improving machinability. आगे बढ़िए। In the next stage, Spear. we come to know what is called diffusion annealing, right? In this diffusion annealing process, let us write it. What is exactly the purpose of diffusion annealing? बेटा diffusion annealing नाम जो अप्लाई कर दिया जाता है, its purpose is to promote uniformity of chemical composition. बेटा जब भी आपके पास cold forged components का डेटा रहता है बेटा, those cold forged components will not have its internal alloying element. That is how isothermal annealing has become successful. कम समय में नीडल का जैसा रखने वाला सीमेंटाइट। सो कोल्ड वर्कर कंपाउंड को ले जाके प्रीवियसली कोल्ड वर्कर मीडियम कार्बन स्टील को ले जाके जब आप आइसोथर्मल एनीलिंग कराएंगे, उसमें ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी रहने की वजह से कम समय में नीडल का जैसा रखने वाला सीमेंटाइट स्फेरिकल फॉर्म में बन जाएगा। Therefore, the spheroidization time can be reduced by previously cold working the medium carbon steel. बोल के टेक्नोलॉजिस्ट ने एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लाया है बेटा। That is how isothermal annealing has become successful with medium carbon steel for improving machinability. आगे बढ़िए। In the next stage, we come to know what is called as diffusion annealing, right? In this diffusion annealing process, let us try to examine what is exactly the purpose of diffusion annealing. बेटा diffusion annealing नाम जो अप्लाई कर दिया जाता है, its purpose is to promote uniformity of chemical composition.
बेटा जब भी आपके पास cold forged components का जगह रहता है बेटा, those cold forged components will not have its internal alloying elements uniformly distributed throughout. Hot forging is always the best process compared to cold forging. लेकिन अचानक if you have to do cold forging process, remember the internal alloying elements will not be uniformly distributed in the cold forged components. In the cast components and cold forged components, दोनों में cast components में भी alloying elements uniformly distribution होकर नहीं रहता है. So after the casting process is over, or after the cold forging process is completed, take the components and then subject it to diffusion annealing. So by diffusion annealing process, what we are going to do? We are going to uniformly distribute the alloying elements, right? When uniformly alloying elements are distributed, isotropic properties will be developed in the material, and we want that uniform mechanical properties. Correct or not? Now, how do you do this? Diffusion annealing कैसा करते हैं? Previously cast steel or previously cold forged steel is taken and it is heated to almost about 900 degrees centigrade. 900 degrees centigrade तक गर्म करने के बाद, that component is held at the constant temperature for a sufficiently long time, 6 hours, 7 hours, long time तक holding करके उसी constant temperature में रख देते हैं. चलो, why such high temperatures? Why such long time? ये दोनों important questions आते हैं. आइए बेटा. Diffusion is time dependent, temperature dependent, mass transportation phenomenon. What is diffusion? Diffusion is a mass transportation phenomenon which takes place as a function of time, temperature and concentration. बोलो. Diffusion is time dependent, temperature dependent, mass transportation phenomenon. What is diffusion? Diffusion is a mass transportation phenomenon which takes place as a function of time, temperature and concentration. बोले तो क्या होता? Higher the temperature up to which this component is heated, more actively diffusion will take place. More the holding time at high temperature, you are giving more time for diffusion of alloying elements from one area to another area. How the alloying elements will get distributed? Alloying elements always will get distributed from high concentration area to low concentration area as a function of time. As a function of time. So as a function of time, when alloying elements get uniformly distributed from high concentration to low concentration regions in the cast components or cold forged components, after the process is completed, the component is cooled back to room temperature. In air, in open air, no furnace cooling again here, only open air cooling. ऐसा करने से alloying elements का uniform distribution बनकर compositional homogeneity, property homogeneity, isotropic properties achieve कर सकते हैं. That is the purpose of diffusion annealing. Then comes what is known as spheroidization annealing. देखिए बेटा, more or less spheroidization annealing is also applied for the same purpose as isothermal annealing. So we write here spheroidization annealing. Spheroidization annealing. Thermodynamics annealing. This is used to improve machinability of high carbon steels. This is used to improve machinability of high carbon steels. So high carbon steels are the steels which contain more than 0.6% of carbon content in them. High carbon steels are the steels which contain more than 0.6% कार्बन कंटेंट इन. बेटा ये पॉइंट नजर रख लेना. स्टील्स में जैसा जैसा आप कार्बन कंटेंट को इंक्रीज करते जाओगे, सीमेंटेड कंटेंट बढ़ता जाता है. राइट? व्हेन सीमेंटेड कंटेंट इन द स्टील इज इंक्रीज, सिंस सीमेंटेड इज अ हार्ड एंड ब्रिटल फेस, उसके वजह से मैशनेबिलिटी कम होता जाता है. देयरफॉर इन हाई कार्बन स्टील्स वी कैन ऑलवेज से हाई कार्बन स्टील्स हैव पुअर मैशनेबिलिटी compared to medium carbon steels. High carbon steels have poor machinability because of more amount of cemented content. That's the reason why we have to improve the machinability. How to improve machinability of high carbon steels? By spheroidization annealing नामक एक दूसरा technique है. So what are we going to do in this process? Let us try to see, friends. Technique by we have to improve the machinability. How to improve machinability of high carbon steels? By spheroidization annealing नामक एक दूसरा technique है. So what are we going to do in this process? Let us try to see, friends. Suppose I am trying to show you the heat treatment cycle. This is, let us say, A1 temperature. High carbon steel is taken and high carbon steel is heated to much above A1. High carbon steel is heated to much above A1. Then, after heating it to much above A1, thermal cycling is done above A1. Let us say, for n number of times, thermal cycling is done. This is called thermal cycling. Thermal cycling is done about A1, followed by gradual cooling to room temperature in open air.
थर्मल साइक्लिंग बोले तो the temperature is decreased, increased, decreased, increased. This decrease alternatively decreasing and increasing of temperature is called as thermal cycling. Come on, beta. What happens in this process, sir? Yesterday you have studied, no? When high carbon steels are taken, come on, beta. When high carbon steels are taken and they are heated to a temperature much above A1, come on, beta. A1, much above A1 बोले तो above ACM भी हो सकता है. Much above A1 बोले तो क्या होता है बेटा? Above ACM भी हो सकता है, depending upon carbon content. Suppose it is a heated steel, above A1 is all right. If it is a hyper heated steel, that is also a high carbon steel. You are going much above ACM. तो क्या होगा सर? Cementite will get converted into austenite. गर्म करने की प्रोसेस में cementite will get converted into austenite. And friends याद में रख लो, cementite is orthorhombic in crystal structure, but austenite is FCC. Austenite is FCC in crystal structure. High temperature में रखने वाला austenite FCC है. Low temperature में रखने वाला cementite orthorhombic crystal structure है. So गर्म करने से बोलो बेटा, गर्म करने से क्या होगा? Orthorhombic cementite will get converted into FCC austenite. And again by cooling, what will happen? FCC will come back to orthorhombic because all these transformations are thermodynamically reversible. So cooling करने से FCC to orthorhombic. दोबारा गर्म करने से again orthorhombic to FCC. Cooling करने में FCC to orthorhombic. Heating करने में orthorhombic to FCC. Then चलो, what is the due to this thermal cycling what is going to happen? Alternatively orthorhombic to FCC, FCC to orthorhombic, orthorhombic to FCC. That means orthorhombic to FCC crystal structure जो बनता है बेटा, it will take place reversibly. It will take place reversibly. अब आइए, when crystal structure changes in opposite directions, based on your knowledge of crystal structure characteristics, what can you say? A to R relationships will change in opposite directions. बोले तो क्या हो सकता? कभी-कभी A to R relationship will increase and sometimes it will decrease. That means volume of cementite will sometimes increase, sometimes decrease. So due to this thermal cycling, what is going to happen? Volume of cementite needles will sometimes increase, sometimes decrease. Like due to crystal structure change, whatever transformations take place in A to R relationships, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंटाइट विल अल्टरनेटिवली एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट, एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट. बहुत सारे बार थर्मल साइक्लिंग करने से क्या होता है सर? बहुत सारे बार वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन जब सीमेंटाइट में बनता है, वहां से क्या होता है? सीमेंटाइट कम ऑन अपना ओरिजिनल शेप को भूल जाकर, व्हाट इज द ओरिजिनल शेप? नीडल लाइक फॉर्म. उसको भूल जाके स्फेरिकल फॉर्म में सेटल हो जाएगा ड्यू टू स्लो कूलिंग इन ओपन एयर. सीमेंटाइट विल फॉरगेट इट्स ओरिजिनल शेप, नीडल लाइक शेप, एंड इट विल सेटल डाउन in spherical configuration. बोलते इस प्रोसेस में क्या हो गया बेटा? In this process we have transformed the needle like cementite into spherical form. Yes, that is what we have to observe. खा जाएंगे फिर जल्दी घर भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं. आगे फिर पानी.